हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें z1 एंड z2 बी एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 z2 सच दैट 3 टाइम्स ऑफ mod of z1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ mod of z2 एंड z की वैल्यू गिवन है 3z1 अपॉन z2 प्लस 2z2 अपॉन 3z1। ठीक है, ये गिवन है आपको z इक्वल्स टू। सो देखो आपको बताना है मॉड्यूलस कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू इसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z 0 है, मॉड्यूलस ऑफ z इसके इक्वल है, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है मेरा। ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा। देखते हैं आप। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है 3 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ z2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ से हो गया अपना 2/3 के इक्वल। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, 3z1 अपॉन 2z2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 2/3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3/2 से, तो वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो यानी मॉड्यूलस ऑफ 3z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 2z2 की वैल्यू मेरी 1 के इक्वल हो गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, हमको गिवन है ना कि z मेरा इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट 3z1 अपॉन 2z2 उसको मैं लेट कर लेता हूँ एक वेरिएबल a के इक्वल। ठीक है, देखो उसको मैंने वेरिएबल a के इक्वल लेट कर लिया, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो मैंने इसको 3z1 अपॉन 2z2 को a के इक्वल लेट करा मैंने, और ये मेरा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। अब देखो मेरे को z की कुछ गिवन ना दिस, तो यहाँ पर z क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 1/a के इक्वल हो जाएगा मेरा z, क्योंकि ये इसका उल्टा ही है ना, 2z2 अपॉन 3z1, ये इसका रिवर्स ही है। तो अगर इसको मैंने a लेट किया तो ये हो जाएगा 1/a, तो z हो गया a प्लस 1/a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में बात करूँ मैं, तो z हो जाएगा मेरा यहाँ पर ये हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करता हूँ, इस वाले को रेशलाइज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, इस वाले टर्म में मैं, तो यहाँ से देखो z इक्वल टू कितना मिल रहा है, z की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे देखो कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा क्या, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, सो इधर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा -1 के इक्वल। ठीक है, सो z होता है अपना, z हो जाएगा यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, अब देखो आयोटा स्क्वायर के लिए -1 पुट करूंगा तो माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है अपना। तो ऐसे z कितना मिल जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, और आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू मिल गया मुझे 2 cos थीटा के इक्वल। तो यानी इसका रियल पार्ट तो अपना कुछ है नहीं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस निकालूँ तो मैं मोड लूंगा तो खाली मेरे को वैल्यू 2 के इक्वल मिलेगी अपना। ठीक है, मॉड्यूलस से 2 के इक्वल मिलेगा आपको, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है अपना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है मेरा 0 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखो ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरा 0 आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि खाली 2 cos थीटा आया मेरा, यहाँ पर साइन थीटा वाली टर्म कुछ नहीं आई मेरे आयोटा के साथ वाली। ठीक है, तो यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। Hello everyone, the question is, if z is a complex number of unit modulus and argument theta, then argument of 1 plus z upon 1 plus z conjugate equals to pi/2 minus theta, theta, pi minus theta, minus theta. इस क्वेश्चन में हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z जिसका मॉडुलस 1 के इक्वल है, यानी कि यूनिट मॉडुलस, और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा के इक्वल है। हमसे इस क्वेश्चन में 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट पूछा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं x प्लस आई वाई की फॉर्म में, जिसका मॉडुलस z मॉडुलस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट 1 के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। अब हमको 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये तो इसका रियल पार्ट हो गया और y इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसमें हम एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिवीजन, मतलब दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को। तो ये क्या बन जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, ऊपर तो स्क्वायरिंग हो जाएगी, ऊपर तो सिंपली ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स वाई आई। ठीक है, और नीचे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, इसको मैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैपिटल जेड अज्यूम कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा नोटेशन दे देता हूँ उसको, क्योंकि बार बार मैं नहीं लिख रहा फिर इसको। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि जो हमने अभी एज्यूम किया है, इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, कैपिटल Z। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 2। अब जैसे डिनोमिनेटर इसके कॉमन है तो कैंसिल आउट ही जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ न्यूमरेटर में से ही टर्म को ले रहा हूँ। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट इसका 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन रियल पार्ट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये इसका आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में नहीं छेड़ रहा, न्यूमरेटर में एज इट इज ही रख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इधर, किधर से, इधर से, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं पूरे को रिप्लेस कर देता हूँ, इस पूरी टर्म को रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स अप इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसको यहीं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये डायरेक्टली ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से x कॉमन भी आ जाएगा, तो मैं x को कॉमन लिख लेता हूँ, आई मीन 2x कॉमन आ जाएगा, ऊपर की टर्म एज इट इज और नीचे 2x कॉमन और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बची हुई टर्म आएगी वो आएगी tan इनवर्स y अपॉन x, जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर है, स्मॉल z के बराबर है, जो कि थीटा है हमारे पास। तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। और अगर हम इसे ऑप्शंस में मैच करें तो ये हमारे पास दूसरा वाला ही ऑप्शन है, थीटा। थैंक यू। In this question, if argument of z is less than 0, then argument of minus z minus of argument of z equals to, okay, so हमें दिया हुआ है argument of z equals to which is less than 0, and we have to find the argument of minus z minus of argument of z. So यहाँ से हम argument of z is minus लेस देन 0 दिया है, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस थीटा। सो z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास r cos ऑफ माइनस थीटा
plus iota sine of minus theta value. So this is equals to r cos minus theta is cos theta minus of iota sine theta. So this will become r into cos theta minus iota sine theta. So minus of z क्या हो जाएगा, minus of z is minus r into cos theta minus iota sine theta, and so this is equals to r of, so minus r cos theta is, so cos theta minus cos theta is minus cos theta को हमने लिख दिया cos of, take this minus, this इस माइनस को ले लिया तो माइनस cos theta is cos of pi plus theta, cos of pi plus theta क्या हो जाएगा माइनस cos theta एंड प्लस iota sin theta, सॉरी इसको हम लिख दिया pi minus of theta, pi minus theta plus iota sin of pi minus theta, sin of pi minus theta is sin theta, so this is plus iota sin pi by sin pi minus of theta. तो यहाँ से माइनस जेड क्या आ जाएगा, माइनस जेड का अब हम आर्गुमेंट निकालते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है हमारे पास माइनस थीटा, माइनस थीटा हमसे वैल्यू पूछी है आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, सो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, सो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ आर्गुमेंट जो ऑफ जेड इज माइनस थीटा माइनस थीटा, सो दिस वैल्यू इज पाई माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस ऑफ थीटा, सो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो ये वैल्यू आ गया आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस ऑफ आर्गुमेंट जेड इज इक्वल्स टू पाई, क्या आ गया पाई, सो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड minus of argument of z comes out to be pi. Okay, so which option will be the correct option? Option A will be the correct option. Value of then argument of minus z minus of argument of z equals to pi. Okay, so this is the answer for this question. इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास equals to pi. In this question, let z and w be the two non-zero complex number such that mod z equals to mod of w. Okay, and argument of z plus argument of w equals to pi हमें दिया हुआ है, मीन्स mod z equals to mod w and argument of z क्या हो जाएगा यहाँ से, argument of z equals to pi minus of argument of w, argument of w. So let z w क्या लेते हैं, let we will take w equals to r e power iota theta, r e power iota theta. So let w equals to r into e power iota theta and so w bar क्या हो जाएगा, and w bar क्या हो जाएगा, जिससे w bar is r into e power minus iota theta, minus iota theta. तो यहाँ से हमें पता है कि argument of z equals to pi minus of argument of w. So z क्या हो जाएगा, z equals to, so if w equals to r e power iota theta है तो z हमारे पास आ जाएगा r into e power iota of pi minus theta, एंगल क्या हो जाएगा pi minus theta, because difference between sum of these argument of w and z is pi, तो r e power iota pi minus theta. So this is equals to r e power iota pi into e power iota theta minus theta. So this value is r into e power iota pi is e power iota pi, this one is cos pi plus iota sin pi into r into e power minus iota theta. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई r इंटू कोस पाई इज माइनस वन एंड दिस साइन पाई इज जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ r इंटू ई पावर माइनस आयोटा थीटा के इक्वल. ओके, तो यहाँ से हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू, सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ r ई पावर आयोटा थीटा माइनस r w बार, वेयर w इज r इंटू ई पावर आयोटा थीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया w बार के, इसमें z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ w बार के इक्वल आ गया. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि देन z इक्वल्स टू, तो z इक्वल्स टू माइनस ऑफ w बार, मीन्स ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, माइनस w बार के इक्वल आ गया z, वेयर आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इक्वल्स टू पाई, सो z इक्वल्स टू माइनस ऑफ w बार.
Okay, so this is the answer for this question. Hello students, today question is for a non-zero complex number z, let argument of z denotes the principal argument with the range minus pi which less than argument z which is less than equal to pi. Then which of the following statement is or false? Okay students, the given four statement is there. You have to find which of the options are false. Okay students, let's move to the answer. Now I am going to take the first condition here. Okay students, so the first condition they are given is argument of minus 1 comma minus I equal to pi by 4, where I equal to minus root minus 1. Okay students, that means argument of minus 1 comma minus I which is equal to pi by 4, where I equal to root minus 1. Okay students, so by seeing this I am going to draw the diagram here. So the angle, okay students, this is the x and y axis here. So this is y-axis, this is x-axis. So the I equal to minus value. Okay students, therefore the value equal to minus 1 here. Okay students, so the point here is it will come here. Okay students, the point here is it will come here. Okay students, therefore this angle is 90 degree and this angle is 45. So the angle is 90 45. Therefore argument of minus 1 comma minus I which is equal to, here it is in negative side, so it is in rotating clockwise, so minus 3 pi by 4. Okay, so the answer is 3 pi by 4. So here the given is pi by 4, so the answer is false. Okay, so therefore it is false. Okay, so now we're going to take the second option. Okay students, so in our second option they are given the function pi minus y defined as f of t equal to argument of minus 1 plus it. Okay, so for all t belongs to R is continuous at all points. Okay students, where I equal to root of minus 1. Okay, so we have to find this value, t value is continuous of all points. Okay students, therefore I'm going to written here. So f of t equal to argument of minus 1 plus it, right? So here I'm going to draw the diagram here. Here I am going to draw the diagram here. See carefully students. So the value equal to, so first here minus 1 plus value, right? Minus 1 and plus value, so it is plus t and this is minus 1, so the point is here. So the point is here, so the diagram will be line will become this. So this angle is tan theta, tan inverse of t. So this angle total is total angle pi minus tan inverse of t. So this is the angle. Okay students, so this is the angle. So I'm going to return here. So t is greater than 0. So if t is greater than 0, then f of t equal to pi minus tan inverse of t. Then I'm going to take the condition t is less than 0. Then f of t which is equal to, so if it is less than 0, so the point is here minus 1 to minus t here. So the diagram will come here. So this is the angle tan inverse of t. So this is the angle pi minus pi plus tan inverse of t. Okay students, therefore I'm going to return here. Okay students, so pi minus tan inverse of t, so this is the plus value. Okay students, therefore I'm going to substitute the value here. So f of 0 equal to pi value, so f of 0 equal to pi value, so I put 0 tan 0, it will be value is 0, and I'm going to put f of 0 put here, so value equal to here also minus pi. So the value is minus pi to the value here f of 0 equal to pi, this is minus pi. Okay, so therefore it is not continuous. Okay, so it is not continuous. So
it is not continuous, so our option is false. So answer is false because it's not continuous. Okay students, next I'm going to take the option C here. So option C, what they are given, for any two non-zero complex numbers z1 z2, the argument of z1 z2 minus argument of z1 plus argument of z2 they are given is an integer with multiple of 2 pi value. Okay students, with multiple of 2 pi value. So the general term of argument of z1 z2 value I'm going to return here. Okay, so in the general form of argument z1 divided by z2, the formula equal to argument of z1 minus argument of z2. Okay students, so and then plus 2n pi, so this is the value, so this is the given. Now I'm going to substitute the value n, which is 0 1 2 up to n. Okay students, so this is the value I'm going to put here. So in our question, what they given, argument of z1 by z2 minus argument of z1 plus argument of z2. Okay students, so if we add this both one, if we see here, so this value cancel, and this value cancel here, and the remaining term is 2n pi. Okay students, so 2n pi, so the remaining value is 2n pi, where n equal to, I'm going to substitute the values here, so the value equal to 2 pi, so this is the answer. Okay, so the value equal to 2 pi is the correct answer, so it is true. Okay students, so C option is true. Now I'm going to take the option D on. Okay students, so option D, for any three region distinct complex number z1 z2 z3, the locus of the point is satisfying the condition argument of z1 z minus z1 into z2 minus z3 whole divided by z minus z3 into z2 minus z1, which is equal to pi, lies on a straight line. Okay students, let's move to the answer. Now I'm going to return here the argument of z minus z1 into z2 minus z3 whole divided by z minus z3 and z2 minus z1, which is equal to pi, right? Where here the z1 z1 z2 z3, so all the four values here, z1 z2 z3. Okay students, so these points here, it is in it is the locus of the point which forms to the straight line, so the circle is passing through the point z1 z2 z3. Okay, so therefore the locus of the point is real, so this value of z minus z1 and z2 minus z3 whole divided by z minus z3 and z2 minus z1, which is real. Okay students, which is real. Okay students, therefore it is not lie on the straight line, which is not the locus of the point satisfying the condition. Okay students, so it is false. Okay students, it is false. Okay students, therefore in our question they are asking what are the statements are false statements. Okay students, therefore option A, B, D are the answer. Okay students, therefore option A, B, D are the false statement. Okay students, thank you. हमारा क्वेश्चन है मैच द कंडीशंस और एक्सप्रेशन कॉलम 1 विद स्टेटमेंट इन कॉलम 2 z इज नॉन जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमें इस क्वेश्चन में कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड गिवन है. हमें कॉलम फर्स्ट के जो कंडीशंस गिवन है या एक्सप्रेशन गिवन है
उसे कॉलम सेकंड की स्टेटमेंट और कंडीशन से मैच करना है, यानी कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कंडीशन 2 का। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। z कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है नॉन ज़ीरो, तो हमने z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b ले लिया। और हमें गिवन है कॉलम फर्स्ट में गिवन कंडीशन है पहले रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट z का रियल पार्ट इसमें है a इक्वल्स टू 0। देन जो z होगा अब बचेगा इज इक्वल्स टू आयोटा b। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। और इसका मतलब हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा, जो कि स्टेटमेंट है कॉलम सेकंड का, क्यू स्टेटमेंट है कॉलम सेकंड का। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए स्टेटमेंट कॉलम ए का मैच करता है क्यू स्टेटमेंट ऑफ कॉलम सेकंड के। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं कॉलम फर्स्ट के। सेकंड कंडीशन कहती है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू π/4। तो हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/4। तो अब मैं ले लेती हूँ लेट z इक्वल्स टू r cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 और दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ। तो ऑन स्क्वायरिंग मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर और cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर π/4 माइनस sin स्क्वायर π/4, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 आयोटा cos π/4 sin π/4। अब cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2 आयोटा इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू आयोटा। तो इससे पता चल रहा है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं कह सकती हूँ कि रियल पार्ट जो होगा z स्क्वायर का वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कॉलम फर्स्ट का बी स्टेटमेंट कॉलम सेकंड के पी स्टेटमेंट को मैच करता है। तो ये हमारे आंसर है। थैंक यू। Hello students, so the question we have here is if modulus of z is less than equal to 1, modulus of w is less than equal to 1, then we have to show that modulus of z minus w whole square is less than equal to modulus of z minus modulus of w whole square plus argument of z minus argument of w whole square. Okay, so let us proceed with the solution. We'll first of all locate this complex numbers, that is z and w on the complex plane. Okay, so let us suppose this is our complex plane. All right, we are having two complex numbers. Let us suppose this is the position of z and this another, and if we talk about this is the position of w. All right, so let's mark the points. Let us suppose this is origin, that is o of 0 0 coordinates. This is imaginary axis, this is our real axis, this is point A which denotes the position vector of complex number z, this is point B which denotes the position vector of complex number w, and this A to B represents what? W modulus of z minus w. Okay, OA represents modulus of z. All right, and OB represents modulus of w. Okay students, so now what we can write according to
this triangle OAB. We'll apply cosine rule over here, and then we can write that we can write AB modulus whole square is equal to OA modulus whole square plus OB modulus whole square plus, it's minus 2 times modulus of OA modulus of OB into cos of angle between OA and OB. Let us suppose this angle between OA and OB as alpha, L be cos of alpha. Okay, so here what we can write this as modulus of Z minus W whole square is equal to OA can be written as modulus of Z square, OB can be written as modulus of W square minus 2 times modulus of Z into modulus of W into cos of alpha. Since in the question we have to prove modulus of Z minus modulus of W whole square, okay, so for that what we'll do, we can write this as modulus of Z minus W whole square is equal to modulus of Z square plus modulus of W square. We can write it as minus 2 times modulus of Z into modulus of W, so that it'll become this particular quantity. Okay, and also add the same quantity so that it'll not affect our equation, and the last term as it is minus 2 times modulus of Z into modulus of W into cos of alpha. Okay, so from here what we'll get, Z minus W whole square is equal to this whole, let us mark this whole can be written as modulus of Z minus modulus of W whole square. Okay, from here we'll take this 2 times plus 2 times modulus of Z into modulus of W common, will get 1 minus cos of alpha. Okay students, so we also know that 1 minus cos of 2 theta is written as 2 times sine square theta. Okay, we already know this identity, right? So we'll use over here, what we'll get, we will get modulus of Z minus W whole square is equal to modulus of Z minus modulus of W whole square plus 2 times modulus of Z into modulus of W into 2 times sine square alpha by 2, half of the angle. Okay, so it will become 4 times modulus of Z into modulus of W into sine square half of the angle. Here angle is alpha, so here angle will be alpha by 2. Okay, so now what we need to do is, we also know this thing that if we talk about any angle theta, if any angles, any trigonometric function sine of theta is always less than equal to theta. From here we can say that sine square theta is always less than equal to theta square. Okay, so here we'll use the same concept. We can write modulus of Z minus W whole square is always, since this sine square alpha by 2 is always less than equal to this theta square, so it will be less than equal to alpha by 2 whole square. So here it will come less than equal to this modulus of Z minus modulus of W whole square plus 4 times modulus of Z into modulus of W. Here we can replace it by alpha by 2 whole square, that is alpha square by 4. Okay, this 4 will cancel out. We'll get modulus of modulus of Z minus W whole square is less than equal to modulus of Z minus modulus of W whole square plus modulus of Z into modulus of W into alpha square. Okay, let us suppose this as first inequality. Okay, so now we get that. All right, now what we'll write over here,
So as we know that modulus of z is also less than equal to 1 and modulus of w is also less than equal to 1. Okay, so from here we can write that we were having this modulus of z minus w whole square less than equal to modulus of z minus modulus of w whole square. Okay, so here it was plus of modulus of z into modulus of w. Let us suppose the highest value to be 1 and 1. Okay, so it'll definitely be less than this. Left hand side will be less than this particular right hand side because we have assumed the maximum value of modulus of z and modulus of w. Alright, so from here we get alpha. We have to just find alpha now. Like, how can we write alpha? And we already know that alpha was the angle between OA and OB, right? So alpha can be written as argument of z minus argument of w, because argument is actually the angle from positive x-axis in the anti-clockwise direction. Okay, so we can write the above inequality as modulus of z minus w whole square is less than equal to modulus of z minus modulus of w whole square plus argument of z minus argument of w whole square. Alright, so this was the inequality which we needed to prove. This one complete. This is our answer. Thank you.